Welcome to VLearn. This is session 3 of Human-Computer Interface. Today we are going to cover different topics like how human-computer interface is useful for disabled users, menus, forms, command-driven interfaces, natural language, pointer-based uses of interfaces. Other interfaces devices we are going to cover: human-computer interface, good interface design, types of user interfaces, and benefits of common interfaces. So these are the topics that we are going to cover in today's session. So firstly, let us talk about the disabled users, that how this human-computer interface is basically useful for disabled user. So nowadays whatever sort of interfaces are introducing into the market, that interfaces are having many features, and these features are designed for specifically disabled users. A visually impaired person may be unable to use the GUI feature, जिसको दिखाई नहीं देता है, उस पर्सन को भी हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस के थ्रू टीचिंग कर सकते हैं, उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज GUI फीचर, एंड फाइंड दैट टाइपिंग इन कमांड्स आर इजियर, क्योंकि हमारे पास इस टाइप के इंटरफेसेस अवेलेबल हैं. इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द थिंग्स, then even by typing certain commands and words in a simple format, that person can learn the thing, or he or she can work on the technology part. The printed output may be produced on Braille. Yes, Braille is a kind of language that is helpful for the visually impaired person. So with the help of these GUI features, we are able to produce Braille data for the visually impaired person. Similarly, a hearing impaired person may be able to use speech commands, and listen to the output through the speaker. जिसको सुनाई नहीं देता वो पर्सन भी स्पीच कमांड्स की हेल्प से इस इंटरफेस को यूज करके अपने स्टडी या जिस टाइप की वो ट्रेनिंग करना चाहता है वो कर सकता है. इवन आउटपुट भी हम स्पीकर्स के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस मे ऑल्सो बी प्रेफर्ड मेथड फॉर यूजर विद अदर डिसेबिलिटीज हु कैन नॉट यूज अ कीबोर्ड एंड माउस. ये तो हमने दो स्पेसिफिक कैटेगरी कवर किया, विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन की. अदर पर्सन जो किसी भी XYZ रीजन की वजह से दे आर नॉट एबल टू यूज कीबोर्ड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ अदर डिसेबिलिटीज. सो these interfaces, human computer interfaces, will be helpful as it will act as a tool in the hands of disabled users. We are having menus. In menus like MS Office में हमारे पास different menus available होते हैं, like file, edit, view, insert, format tools, slideshow, and all this. So these are the different menus which help us to find the different option or different features that are available within these menus. So you don't have to remember so much commands. You have to just click on the particular menu and you can find the desired feature. Similarly, we can have another interface in the form of forms. Forms is a kind of input जो हम इनिशियल लेवल पे लेते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म है, कस्टमर इंक्वायरी डेटा फॉर्म है, व्हाटएवर इट इज. जो भी इनिशियल लेवल का डेटा है वो हम एक फॉर्म के वे में स्टोर कर सकते हैं, और उस फॉर्म की डिजाइन में वी कैन यूज डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स एंड बटन्स. सो फॉर्म इज अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, और वी कैन से अ डायलॉग बॉक्स फॉर एंटरिंग एज वेल एज फॉर व्यूइंग द डेटा. At some part of time we have to enter certain sort of data into this form, and whenever we require even we can view the same. So form is a kind of interface that acts as a dialogue between two parties, and it is for the designing of forms we have to use different tools that are available within the programming language like text boxes, labels and buttons. So it is an excellent tool
that help us to design the interface. Now further discuss about the command driven interfaces. Command driven interfaces, it make use of the command prompt to give the commands. So we have to type everything in the command mode. So if we want to run a particular command, then the syntax must be correct. Even though this thing is very difficult for an inexperienced user, कमांड ड्राइवन इंटरफेस पे काम करना एक अनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए वेरी डिफिकल्ट होता है. वेल एग्जांपल, सपोज माइक्रोसॉफ्ट डॉस एंड यूनिक्स. Until unless you don't remember the exact syntax of these commands that we use in the DOS and Unix. DOS stands for Disk Operating System and DOS is a single user operating system जो सीधा कमांड मोड पे काम करता है कुछ कमांड्स की हेल्प से. यूनिक्स में भी हमारे पास प्रोग्रामिंग करने के लिए कमांड्स अवेलेबल है. वी कैन राइट यूनिट शेल स्क्रिप्ट ऑल्सो. सो कमांड ड्राइवन इंटरफेसेस दे मेक यूज ऑफ द DOS एंड यूनिक्स टू गिव द कमांड्स. एंड एडवांटेजेस क्या है कमांड ड्राइवन इंटरफेसेस के? कैन यू थिंक अबाउट इट? यस, यू आर राइट. पावरफुल, क्विक एंड फ्लेक्सिबल. The basic advantage that are provided by the command driven interfaces are that they are so powerful. Commands are there. You can just by learning once, you can quickly work on that particular commands, and they are flexible. Means changes are being done. We are having different switches with them that help us to do certain sort of changes. Next is disadvantages. When we talk about the disadvantages of command driven interfaces, so disadvantages are that basically they are difficult. Sometimes the commands are not so easy that you can run in a single step. So that is why this is one of the parameter that is being provided by the command driven interface, and it is treated as a disadvantage that it is difficult to implement sometimes. Need experience, yes. Until unless you are not experienced, you cannot work flexibly or efficiently in this particular command driven interface. Syntax is difficult to remember, yes, true. Or typing mistakes. So if you are not a good typist, so you can make some blunder mistakes by typing. So these typographic errors are a kind of disadvantage in case of command driven interfaces. Now let us talk about the natural language. Natural language क्या होती है? वो लैंग्वेज जो जिस भी मैनर में हम बोल रहे हैं दूसरा पर्सन या दूसरा सिस्टम उसको समझ रहा है. जिससे हम जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ सच ए लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड. सपोज आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आपसे कभी हिंदी में बात कर रही हूँ, कभी इंग्लिश में. समटाइम आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स and you people, you my dear students are able to understand the things. Similarly, if I want that the computer should understand my mixed language or natural language, natural tone of saying anything, so that language which sets a sort of communication between machine and the user is a kind of natural language. So normal speech that is recognized by a computer is natural language interface. Always remember normal speech. वो नॉर्मल स्पीच जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग करता है. टॉक टू कंप्यूटर एंड इट रिकॉग्नाइजेज व्हाट वी वांट. जो भी हम कहना चाहते हैं अगर हमारा कंप्यूटर इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है, सो इट मीन्स आवर कंप्यूटर और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज रिकॉग्नाइजिंग द नेचुरल लैंग्वेज. Natural means human like. Always remember this thing. Natural means just like a human being. And the technology is learning towards getting computer to behave in a more natural way. इससे हमारे बहुत सारे hurdles खत्म हो जाते हैं. When machine tries to behave like a human being, right? So artificial intelligence branch of computer science is working on that part. By means of some propositional statement, propositional logic and like different parameters of the artificial intelligence, they are working hard on that part so that our computer should be able to understand natural language or normal speech, right? That is just like a human being. Now another is pointer based. When we talk about the pointer based, so nowadays we are having such a mobiles with us in the market that provide a kind of pen
which is just like a stylus. एक specific pad के ऊपर ये stylus जो है pen work करता है. So using a pen like stylus on a special pad or tablet is a pointer based device. Used in freehand graphics and CAD using special software that recognizes the shape and style of the lines. Right? When we talk about the pointer based, this could also be used as a touch sensitive screen, जिसमें हम हल्का सा कुछ टच करते हैं वही चीज वो डिटेक्ट कर लेता है और उसमें हमारी डेटा इनपुट हो जाती है. All are easy to use. All the pointer devices are basically very much easy to use and more natural than using a mouse. Right? Other interfaces devices. Can you think about the other interfaces devices? Yes. First one that we are very much well versed is mouse and keyboard. Third is touch sensitive pad. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था मोबाइल का जिसमें टच सेंसिटिव पैड होते हैं. And the last one is speech recognition. So the examples of interfaces devices are mouse, keyboard, touch sensitive pad, speech recognition. Now let us further discuss about the human computer interface. Human computer interface जिसमें human being interact करता है. Sometimes you have definitely gone through with the like magazines, cartoon magazines. That is a very good example of a human computer interface जिसमें nobody is speaking any single word, but still the two parties, the reader as well as the writer, they are able to communicate only with the help of human computer interface. ठीक है. Next is human computer interface is not just about the software design. When we talk about the human computer interface, it means we are not talking about the software design, DFD, flow chart, ER diagram. हम सब इसके बारे में बात ये तो include है ही है. These are the part of this. Apart from this, we are covering the human computer interface. So human computer interface basically applies to more than just desktop PCs. सिर्फ हम डेस्कटॉप पीसी के ऊपर आइकन, मेन्यू, ड्रॉप डाउन इस सब की बात नहीं कर रहे हैं. इट इज कवरिंग द लार्ज होरिज़ोन that is directly related with that of the computer industry. No such thing as the best human computer interface. That is, the choice of interface will depend on physical environment, experience of user and amount of information that need to be gathered or conveyed. जब भी आप एक human computer interface को डिजाइन कर रहे हैं, so human computer interface basically focus on to the physical environment, एक्सपीरियंस ऑफ यूजर्स, राइट, किसका क्या यूजर है, हमारी ऑडियंस का टाइप क्या है, एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम इस इंटरफेस के थ्रू कन्वे करना चाहते हैं. whenever we are designing a human computer interface, we have to kept all these parameters in our mind, including environment, right? Good interface design. User should be able to use an interface. इसके लिए क्या जरूरी है, हमारी जो इंटरफेस है that must have certain parameters with it. That is, task cannot be completed without risk. Is that flying on aeroplane? आपकी इंटरफेस कैसी भी डिजाइन की गई, but ultimately the task must be completed and even without any sort of risk. If we are able to design such an interface, then the interface is said to be good. Another is being able to do the right task and do it well. काम किया लेकिन उसको अच्छे से करना, राइट, जैसे वीडियो के ऊपर टीवी प्रोग्राम देखना, राइट, efficiently to carry out the task quickly and correctly. That is the part of good interface. Enjoyably, our interface should have such a feature so that the people or the user who are going to use it, they must enjoy it. User should be able to enjoy what they are doing, not be frustrated by the interface. Is that educational programs हर जगह नहीं होने चाहिए. There must be sort of interaction, a sort of interesting element must be the part of good interface design. Now, there are basically 4 considerations for an interface designer. Whenever we are going to design any sort of interface, then to make it good interface design, we have to follow these 4 parameters.
we have to keep this thing in our mind that who is going to use the system and what are their ages or sex. उनका एज फैक्टर क्या है, कौन यूज करने जा रहा है हमारे सिस्टम को. You should have the answer of this particular question before actually designing the good interface. What tasks are they likely to want to perform? That is repetitive task है, complex task है, सिंपल टास्क है, और क्या टास्क एग्जैक्टली परफॉर्म करने जा रहा है, उसकी लेवल और डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. दैट शुड बी द सेकंड पैरामीटर ऑफ डिजाइनिंग ऑफ गुड इंटरफेस. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट. वेयर इज द कंप्यूटर टू बी यूज्ड? इन ए हैजार्डियस और नॉइसी एनवायरमेंट. If you are able to give the answer of this particular question, then you will be able to judge the environment of the interface design. Next one is feasibility. What is technically or technologically available? Designers should not add elements to the interface that cannot actually be used out easily. हमारे डिजाइनर्स उन एलिमेंट्स को बिल्कुल भी इंटरफेस में ऐड नहीं करना चाहिए जिनकी कभी जरूरत ही नहीं है या जिसको इजीली हम एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं. So feasibility should be the characteristic feature of any interface design. If your interface is reflecting or is having all these four parameters, then that interface comes under the category of good interface design. Now let us further talk about the kinds of different types of user interfaces. First one is command line interface. A command line interface basically displays a prompt. The user types a command on the keyboard and executes the command. The computer executes the command providing textual output. कमांड लाइन इंटरफेस में जैसे हमने पहले भी कवर किया है कि हमने डॉस और यूनिक्स का एग्जांपल लिया जिसमें एवरी टाइम यूजर हैज टू टाइप सम कमांड टू गेट द वर्क डन. ठीक है. नेक्स्ट इज मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस. The user has a list of items to choose from and can make selection by highlighting them. Menu driven interface is a very popular and user friendly interface design and it has a list of items to choose from so that हम अपने requirement के according इन items को highlight कर लेते हैं जो हमें चाहिए होते हैं. Next is user interface, that is GUI. When we talk about the GUI, so GUI basically includes icons, menus and pointers. In short, it is called as a WIMP. W means Windows, I stands for icon, M stands for menus and P stands for pointers, which can be manipulated by a mouse. Right? Natural language interface. It can range from simple command system to voice activated text processing. That is, commands are spoken in normal language, natural language interface में. कमांड लाइन इंटरफेस इसके कुछ एडवांटेजेस हैं दैट दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद द यूज ऑफ स्विचेस. दीज आर द एडवांटेजेस. गुड फॉर द एक्सपर्ट यूजर कैन क्विकली एक्सेस द कमांड. जिनको अच्छे से कमांड्स लर्न हैं दे कैन इजीली वर्क एंड वेरी क्विकली दे कैन वर्क द कमांड ऑफ द कमांड लाइन इंटरफेसेस. यूजेस फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज भी कम यूटिलाइज होते हैं कमांड लाइन इंटरफेसेस को यूज करने से. जिस तरह से कुछ एडवांटेजेस हैं उसी टाइप से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कमांड लाइन इंटरफेसेस के. दैट इज इट रिक्वायर द यूजर टू लर्न कॉम्प्लेक्स कमांड और लैंग्वेज. बट आप कमांड लाइन इंटरफेस पे तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आप डिफरेंट कमांड्स को लर्न नहीं कर सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स कमांड को लर्न करना इट्स अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज इन द एट द पार्ट ऑफ कमांड लाइन इंटरफेसेस. हिडन फीचर इज दैट इफ यू डोंट नो द कमांड यू वोंट नो द फीचर्स आर देयर. कमांड नहीं आती इसका मतलब कुछ फीचर जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इट. और ट्रेनर्स के लिए ट्रेनिंग टाइप के यूजर्स के लिए बिगिनर लेवल के यूजर्स के लिए दिस कमांड लाइन इंटरफेस इज सपोज टू बी नॉट गुड. कमांड लाइन इंटरफेसेस के कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, आइडियल फॉर विजुअली इंपेयर्ड यूजर. ये कुछ एरियाज हैं जहां पे हम कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करते हैं. इसी टाइप से मेन्यू ड्राइवन इंटरफेसेस हैं जिसके एडवांटेजेस क्या हैं. देयर इज नो नीड टू लर्न द कॉम्प्लेक्स कमांड. जिस तरह से हमने कमांड लाइन इंटरफेसेस में बहुत सारी कमांड्स को लर्न करना पड़ता है बट मेन्यू ड्राइवन इंटरफेसेस में देयर इज नो नीड टू लर्न द कॉम्प्लेक्स कमांड. इजी फॉर अ लर्नर टू लर्न और यूज. इसीलिए बिगिनर लेवल पर मेन्यू ड्राइवन अप्रोच में काम करना आसान होता है लर्नर के लिए.
It is ideal when there are a limited number of options. जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, then in that particular situation menu driven interface is helpful in increasing the efficiency of the work. Similarly, a menu driven interface is also having some sort of disadvantages. It can be frustrating for experienced user. किस तरह से frustrating होगा? So that the command they want to use is buried by 5 levels deep. उसके पार्ट के अंदर included है. User interfaces may be limited by the screen space and number of options available. Right? So that is a kind of disadvantage in the menu driven interfaces. Now let us discuss some examples where the menu driven application can be used very well. ATM, mobile phone, MP3 player, video recorder, household devices, digital or cable TV. These are the menu driven application areas where we can use the menu driven approach very widely. Graphical user interfaces are basically suitable for inexperienced or beginners user, क्योंकि GUI के हेल्प से हम उनको समझा देते हैं easily. So GUI use more system resources as compared to that of the command line interfaces. Graphical user interfaces, many generic packages for the GUI will share a common feature. हम जब GUI के बारे में बात करते हैं तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी टाइप के इंटरफेसेस यूज करते हैं, जैसे कि लेआउट ऑफ द स्क्रीन, नेम्स गिवन टू द कमांड, आइकन्स, ऑर्डर ऑफ मेन्यूज, माउस ऑपरेशन, डायलॉग बॉक्सेस. There are certain benefits of a common interfaces. There are basically 5 advantages of the common user interfaces. First one is easy of use. Next is confidence for training users. It increases the range of solvable tasks by user. Greater range of software available to the average computer user. Now we are going to cover the natural language interface advantages. No training is required. You just tell the computer what you want to do. These are the advantages that are given by the natural language interfaces. It can be quicker than the keyboard entry. If your computer is able to understand the natural language, then it will work faster as compared to that of the input from the keyboard. Hands-free could be invaluable in some environment. It can be used by the disabled person. Similarly, a natural language is having some sort of disadvantages also. That is, emerging technology still contains bugs, difficulty in dealing or in bringing about the standardization of work, difficult to recognize all the different ways of saying things, that is regional dialects. Artificial languages are often more precise. So before ending this session, I am going to give you 2 questions that you have to do. First question is, make notes for human computer interface from this presentation only, and you can use the internet sources also. What are the benefits? Second question is, what are the benefits of the common interfaces? Right? With this we are going to finish this session. Thank you.